Good morning, students. This is the fourth video of Chapter 1, Reproduction in Organisms. In the previous video, we were discussing about asexual reproduction. In this video, we will talk about sexual reproduction. Sexual reproduction involves formation of the male and female gametes either by the same individual or by different individuals of the opposite sex. Now, as we know, there are two types of organisms, homosexual and heterosexual. Heteroorganisms are those organisms which has both male body different and female body different. So, therefore, their male reproductive organs are in different body and female reproductive organs are in different body. Whereas when we talk of homosexuals, both male and female reproductive organs are in single body. So reproduction involves two gametes, male gamete and female gamete. Male gamete comes from male reproductive organ and female gamete comes from female reproductive organ. Male gamete is the sperm and female gamete, as we know, is the egg or the ovum. These gametes fuse to form the zygote, which develops to form the new organism. जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, तब एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. That zygote develops into embryo and embryo develops into fetus. Fetus develops into a new organism altogether. It is an elaborate, complex and slow process as compared to asexual reproduction. Because of the fusion of male and female gametes, sexual reproduction results in offspring that are not identical to the parents or amongst themselves. A study of diverse organisms, plants, animals or fungi show that though they differ so greatly in external morphology, internal structure and physiology, when it comes to sexual mode of reproduction, surprisingly, they share a similar pattern. Let us first discuss what features are common to these diverse organisms. See, when we talk about asexual reproduction से जो offspring डेवलप होते हैं वो ऑफस्प्रिंग बिल्कुल सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट बॉडी के. बट व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग डेवलप होते हैं वो मेल के कैरेक्टर्स भी गेन करते हैं और फीमेल के कैरेक्टर्स भी गेन करते हैं. सो दे आर नॉट एग्जैक्टली क्लोन्स ऑफ देयर पेरेंट्स बट दे आर सिमिलर टू सम एक्सटेंट. And when we talk about diverse organisms like plants, animals और fungi, सारे के सारे kingdom और बाकी की categories में कुछ similarities होती हैं. For example, अगर हम animals की बात करें, both cat and dog, they are different in families but placed under same order. They are different in families because of difference in characteristic features. But when we talk of sexual reproduction, तो उनमें same तरह से sexual reproduction की process होती है. Means the mechanism that they have developed for sexual reproduction is the same. Similarly, when we talk about plants, all plants are different in physiology and other characters. But when we talk of reproduction, they all reproduce through various processes involving pollination and involvement of stigma or anther. All organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually. सारे organism को एक certain growth attain करनी पड़ती है पहले और उनको mature होना पड़ता है sexual reproduction की process conduct करने से पहले. इस ग्रोथ पीरियड को हम एनिमल्स में जुवेनाइल फेज बोलते हैं और प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज. दिस फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशंस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. द एंड ऑफ जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज, which marks the beginning of the reproductive phase, can be seen easily in the higher plants when they come to flower. जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज जब खत्म हो जाते हैं
तब हमें इजीली दिख जाता है, बिकॉज प्लांट्स के केस में फ्लावर्स डेवलप हो जाते हैं एंड एनिमल के केस में certain more characteristic features develop like pubic hair, mammary glands, etc. How long does it take for marigold, rice, wheat, coconut, mango plant to come to flower? In some plants where flowering occurs more than once, what would you call the interflowering period, juvenile or mature? यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा बार पूरे साल में फ्लावर्स ग्रो करते हैं. तो जब एक फ्लावर की ग्रोथ हो गई, उसके बाद द पीरियड बिटवीन द ग्रोथ ऑफ द second flower, what is it called? So, observe a few trees in your area. Do flower during the same month, year after year? Why do you think the availability of fruits like mango, apple, jackfruit, etc. is seasonal? Are these some plants that flower throughout the year and some other that show seasonal flowering? Plants, the annual and biennial types. Annual plants वो होते हैं जो साल में सिर्फ एक ही बार सीड्स या फिर फ्लावर को डेवलप करते हैं, एंड बाइनियल 2 times डेवलप करते हैं. Show clear cut vegetative, reproductive and senescent phases. But in the perennial species, it is very difficult to clearly define these phases. Perennial मतलब more than 2. उनके फ्लावर्स एक साल में 2 से ज़्यादा बार डेवलप होते हैं, इसीलिए हमको ये पता नहीं चलता कि जुवेनाइल फेज चल रहा है उनका या वेजिटेटिव फेज चल रहा है, और द रिप्रोडक्टिव फेज. A few plants exhibit unusual flowering phenomena. Some of them, such as bamboo species, flower only once in their lifetime, generally after 50 to 100 years, produce large number of fruits and die. Another plant, Strobilanthes kunthiana, Neel Kuranji, flower once in 12 years. As many of you would be knowing that this plant flowered during September to October 2006. Its mass flowering transformed large tracts of hilly areas in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu into blue stretches and attached a large number of tourists. In animals, the juvenile phase is followed by morphological and physiological changes prior to active reproductive behavior. The reproductive phase is also of variable duration in different organisms. अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही अजीब फ्लावरिंग पैटर्न्स शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल बैम्बू प्लांट 50 to 100 ईयर्स में एक ही बार फ्लावर प्रोड्यूस करता है. सिमिलरली नीला कुरंजी 12 ईयर्स में एक बार फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है. लास्ट सितंबर टू अक्टूबर 2006 में केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में इसने फ्लावर्स प्रोड्यूस किए थे, जिसकी वजह से टूरिस्ट बहुत अट्रैक्ट हुए थे. Can you list the changes seen in human beings that are indicative of reproductive maturity? ऐसे ही जब ऑर्गेनिजम्स की हम बात करते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, तो वो कुछ रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, प्यूबिक हेयर एंड मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट. Also, ostrich cycle and menstrual cycles. All this we will discuss in this chapter only. Among animals, for example birds, do they lay eggs all through the year, or is it a seasonal phenomenon? What about other animals like frogs and lizards? Animals में भी हर animal का reproductive phenomena different होता है. For example, birds eggs lay करते हैं. अगर हम frogs और lizards की बात करें तो वो भी eggs lay करते हैं, लेकिन कुछ animals viviparous होते हैं और वो directly young ones को birth देते हैं. However, birds in captivity as a poultry farms can be made to lay eggs throughout the year. In this case, laying eggs is not related to reproduction but is a commercial exploitation for human welfare. Human welfare के लिए पोल्ट्री फार्म्स में
हेन्स को रखा जाता है ताकि उनसे एग जो ले होते हैं उसको सेल किया जाता है। इकोनॉमिकली ये प्रोसेस कराई जाती है, बट दिस इज नॉट अ रिप्रोडक्शन प्रोसेस। ये कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए प्रोसेस होती है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए। So this is different, but the females of placental mammals exhibit cyclic changes in the activities of ovaries and accessory ducts as well as hormones during the reproductive phase. In non-primitive mammals like cows, sheep, rats, deers, dog, tiger, etc., such cyclic changes during reproduction are called ostrus cycle. सी सारे ऑर्गेनिज्म की जो फीमेल्स होती हैं, स्पेशली फीमेल्स, वो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स के थ्रू जाती हैं। रिप्रोडक्टिव साइकिल्स प्रिमिटिव मैमल्स में अलग होते हैं एंड नॉन प्रिमिटिव में अलग होते हैं। तो जो नॉन प्राइमेट्स मैमल होते हैं जैसे कि काउ, शीप, रैट, डियर, डॉग और टाइगर एक्सेट्रा, उसमें इस साइकिल को ऑस्ट्रिस साइकिल बोलते हैं। बट अगर यही सेम साइकिल प्राइमेट्स में हो, प्राइमेट्स मतलब मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस, इनमें इस साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। बट बोथ दीज साइकिल आर द साइकिल ऑफ ओवरीज। Many mammals, especially those living in natural wild conditions, exhibit such cycles only during favorable seasons in their reproductive phase and are therefore called seasonal breeders. Many other mammals are reproductively active throughout their reproductive phase and hence are called continuous breeders. जो सीजनल ब्रीडिंग करते हैं ऑर्गेनिज्म, उनको हम सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं, एंड जिनका रिप्रोडक्टिव फेज थ्रू आउट ईयर चलता है उसको कंटिन्यूस ब्रीडर्स बोलते हैं। That we all grow old if we live enough is something that we recognize. But what is meant by growing old? The end of reproductive phase can be considered as one of the parameters of senescence or old age. There are concomitant changes in the body like slowing of metabolism, etc. During this last phase of lifespan, old age ultimately leads to death. In both plants and animals, hormones are responsible for the transition between the three phases. Interaction between hormones and certain environmental factors regulate the reproductive processes and the associated behavioral expressions of organism. सी ये सारे रिप्रोडक्टिव फेज और जुवेनाइल फेज एक सर्टेन एज तक ही होते हैं। सबसे पहले जो फेज होता है वो जुवेनाइल फेज होता है, देन रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट्स। रिप्रोडक्टिव फेज जब खत्म होता है तो हम ये मानते हैं कि ओल्ड एज स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज ओल्ड एज में रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी किसी भी ऑर्गेनिज्म में नहीं होती। सो जितने भी चेंजेस ओल्ड एज में आते हैं वो सब हॉर्मोन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नॉट ओनली दिस बट जुवेनाइल फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में जाने के लिए भी जितने भी चेंजेस हैं सब के लिए हॉर्मोन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हॉर्मोन्स के अलावा कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं और बिहेवियरल एक्सप्रेशंस को रेगुलेट करते हैं। Okay, understood all three phases? Now in the next video, we will talk about certain events in sexual reproduction.